हेलो एंड आप सभी को सुष्मिता का प्यार भरा नमस्ते। वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ओके? बट बिफोर दैट what we always do is take a quick recap of what we have been learning, correct? So before we start the topic, let us first try and recall what we did in our last class. What were we discussing? Basically, we discussed that verbs are nothing but action words, which means something is being done. कोई काम के होने का आपको पता चल रहा है. So verbs are those words which helps you to know about an action which is being done. Correct? So if I give you an example, I brush my teeth. So what am I doing? So what is the question that we ask? We usually ask the question what? Right? What am I doing? Like I am brushing या मैं brush कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ which is involving the physical movement of my body. I am teaching. Can you see my head nodding, my hands moving, my giving you instructions or maybe turning. So there is a physical movement of my body. So हमको ये समझ में आया था. We also read that basically I also told you usually आपके noun के बाद में या pronoun के बाद में verbs आते हैं. Now please remember I said usually, which means most of the time, but definitely there will be sentences जहां पर आपको verbs और the subject यानी कि जो noun और pronoun है उनके बीच में कुछ words दिखेंगे. हम आज उसी के बारे में विस्तार से सीखेंगे. We will be learning about it in details. So let us first go through the definition of verbs. What did it tell you? It tells you that verb is a word which indicates. What does it indicate? Indicate means shows, which indicates an action, a state of being, a state of possession, or maybe a state of doing something. Okay? And action. Action के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में बात की थी. Eat, sleep, run, play, jump, read, swim, cook, drive, play, sing, dance. The list is endless. I am sure कुछ words आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे. Please उसको साथ साथ बोले या सोचे. Open up your brains and think about all the words which come into your mind. Correct? So an action we discussed in details और हमको ये बात समझ में आ गया था. जब हम verbs के sentences लिखते हैं हम ये देखेंगे या we will see that in that verb will be divided into two class or two types. Okay? अच्छा, let me tell you that आज हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ब के बारे में सीखने वाले हैं. राइट? सो वर्ड एज इन हमको पता चलेगा कि वो आपका एक्शन वर्ड है या वो एक हेल्पिंग वर्ड है. हेल्पिंग वर्ड एक्चुअली जो कि आपके इस एक्शन की मदद कर रहा है. एज द वर्ड सेज हेल्पिंग. हेल्पिंग का मतलब क्या है? मदद करना. करेक्ट? तो जब हमने एक सेंटेंस देखा आई ब्रश माई टीथ, यहां पर सीधा एक्शन है ब्रश और प्रोनाउन है आई, उसके बीच में कोई और वर्ड्स नहीं है. तो यहां पर जो एक्शन हो रहा है वो उस सेंटेंस का मेन वर्ड है. तो हम ये समझ पाए कि एक सेंटेंस में मेन वर्ड को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है विद क्वेश्चंस लाइक व्हाट एंड हु इज डूइंग. राइट? कौन कर रहा है से हमको पता चलता है कि वो सब्जेक्ट है. एंड व्हाट इज द पर्सन डूइंग इज द come on tell me, it's the verb, it is the action. Right? उस एक्शन को हम मेन वर्ब कहते हैं. आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है? एक्शन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड. एक्शन वर्ड बेसिकली आपका
मेन वर्ब होता है ऑफ अ सेंटेंस। एज द नेम सजेस्ट, मेन वर्ब यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन के बारे में आपको बता रहा है। इट इज टेलिंग यू अबाउट द एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू राम ate a carrot, the sentence says Ram ate a carrot. When you are thinking about this sentence, आपके दिमाग में क्या पिक्चर्स आ रहे हैं? आपके दिमाग में आया there's a boy called Ram और आपके दिमाग में आया carrot, है ना? राम carrot और बीच में वर्ड है Ram ate a carrot, right? So क्या एक्शन है जो हमारा नाउन परफॉर्म कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो खा रहा है। So in that sentence, या खाया था, we said ate, right? So Ram ate a carrot. Ate is the action which is being done by Ram. Ram उस एक्शन को कर रहा है। So यहाँ पर ate आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है? Now helping verb का काम क्या होता है? As the name suggests, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब की हेल्प करना या मेन वर्ब को सपोर्ट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम उसका होता है मेन वर्ब को इन अ सेंटेंस को सपोर्ट करना। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। फॉर इजी लर्निंग वी विल बी रिमेम्बरिंग इट एज हेल्पिंग वर्ब। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, इट कैन बी क्लासिफाइड, ओके, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, लेट्स सी, टू बी और टू डू और टू हैव, ओके। To be is like is, am, are, was, were. So to do is like did, do, does, doing, okay? And to have as in has, have, had, is having, will have, and so on. See, the idea is not कि आप इन सारे वर्ड्स को याद करें। आपको हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से एक सेंटेंस में फाइंड करना है, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस हाउ विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। We will do it with few examples. So helping verbs का काम होता है to help the main verb. Okay? It can be in to be form or to do form or to have form. Like is, am, are, was, were. For to do it is did, do, does, doing. To have as in has, have, had, is having, will have, etc. Okay? So now let us see कि हम हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी, जब हम एक सेंटेंस के बारे में, अभी तक हमने दो चीज सीखा, हमने नाउन सीखे एंड देन वी लर्न अबाउट वर्ब्स, राइट? सो बेसिकली व्हाट डिड वी सी कि जो नाउन है वो एक एक्शन कर रहा है। सो हम बिफोर वी स्टार्ट द रूल्स ऑफ नोइंग हाउ टू फाइंड अ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, I would like to give you one idea about something called subject. See, subject and predicate is a topic in itself, and let me tell you, our next video will definitely be on subject and predicate. So before we learn about it, हम अगर एक idea लें कि what is the subject? Subject is the doer of the action. जो भी काम हो रहा है उसको कौन कर रहा है? Subject is the doer of the action. ठीक है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, या तो वो कोई काम हो रहा है या जिसके बारे में बात की जा रही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फॉर टाइम। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को करते हैं, आई विल राइट बिकॉज वी विल बी डूइंग एग्जांपल्स, हम यहां पर रूल्स को लिखते हैं। सबसे पहले, सो व्हाट इज दिस? रूल्स ऑफ फाइंडिंग द
the subject. Second rule says find the main verb. Then see the words between the subject and the main verb. ठीक है? Clear? Tells the time or the mood of or the tone of the sentence. वो हमको उस sentence का mood या tone बताता है. Please do not get stressed or confused seeing so many rules, है ना? Simple है. आपको एक sentence देखना है, उसमें आपको subject identify करना है. First step, identify the subject. Second step, find the main verb. Main verb कैसे identify करेंगे? कौन सा action हो रहा है, आपने वो identify कर लिया. फिर subject और main verb के बीच में जो words हैं, look at those words. उन वर्ड से अगर आपको पता चलता है कि वो हमें उस एक्शन का समय या उस स्टेटमेंट का मूड या टोन बता रहे हैं, वही आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे. Let us practice some examples and I'm sure you will get a clarity on this. The first sentence is I have finished my lunch. I have finished my lunch. So मैम ने आपको क्या बोला था? सब्जेक्ट क्या है? जो उस स्टेटमेंट में या सेंटेंस में काम को कर रहा है, the doer, right? So आप क्वेश्चंस लाइक who या what जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा. Who finished the lunch? So I यहां पर है आपका सब्जेक्ट. So S. क्या काम हुआ है? काम जो भी था वो लंच का काम, लंच खाने का टाइम काम था, वो खत्म हो गया. सो दिस इज द मेन वर्ब. MV stands for main verb. Now subject और main verb के बीच में क्या वर्ड है बताइए आप? It is have. Okay? So ये वर्ड का टाइम के बारे में आपको बता रहा है, right? See, I told you it will tell you about the time or the mood or tone of the sentence. Here it is telling you about the time. Time यानी कि tenses, they also occupy a very important role in English. We will eventually be doing that. Okay? I have. So यहाँ पर have will be working as the helping verb. Okay? This is first example that we have done. Let us do the second example. It will become, more clear to you when you do examples. Second example that we will do is Ram is baking a cake. Ma'am is only talking about food. See? So Ram is baking a cake. Who is baking a cake? किसके बारे में बात हो रही है? जब हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं, हमारे पिक्चर में इमेजिनेशन में आ रहा है राम, एक बॉय और एक यम्मी डिलीशियस सा केक, राइट? तो यहाँ पे कौन बना रहा है केक? राम. सो राम इज द सब्जेक्ट. What is Ram doing? क्या एक्शन हो रहा है जब वो बेक कर रहा है? He is, taking every ingredient, mixing it, going to the oven, going to the microwave and doing all sorts of work. So baking is the action. So this becomes the main verb. Okay? अब इन दोनों के बीच में देखो कौन सा वर्ड है? Is. So is the being form. So is becomes the helping verb. Okay? Let us take one more example. Third, they are playing in the park. They are playing in the park. क्या एक्शन हो रहा है?
खेलने का, जब हम खेल रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूविंग अराउंड, दिस इज द मेन वर्ब. Who are playing in the park? They are playing in the park. So they becomes the subject. See the word between these two? It is are. They are playing in the park. इस part of the sentence और इस part of the sentence को यहाँ पर are के साथ में attach करने से हमको पता चल रहा है कि are अभी वो खेल रहे हैं, which means it tells us about the टाइम ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अभी भी वो खेल रहे हैं. अगर ये वर्ड सपोज वर हो जाता, दे वर प्लेइंग इन द पार्क, यानी वो लोग खेल रहे थे, अगेन हमको एक्शन के होने का टाइम पता चल रहा है, राइट? सो दिस इज सेटिंग द टाइम, इट इज टेलिंग द टाइम ऑफ द एक्शन व्हेन इट इज बीइंग डन, इट इज हेल्पिंग. सो इट इज सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में दिस वर्ड इज हेल्पिंग अस, you know, it is helping the main verb, so this is the helping verb. Okay, we will take one more example for today, and then we will be doing about linking verbs in our next class. So now it is important, the fourth example, like मैंने एक में आपको दो example दिखा दिया. It is a beautiful day. It is a beautiful day. See, these things require a lot of practice. आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उन सेंटेंसेस से आपको और भी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा. इट इज अ ब्यूटिफुल डे, तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर से दिन की बात हो रही है. इट्स अ ब्यूटिफुल डे, राइट? यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमको कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, हमको इज दिखाई दे रहा है, राइट? सो हमको ये तो समझ में आ गया कि इज, was, were, इन वर्ड्स को देख करके हम पता कर सकते हैं whether it is a helping verb or not. But in sentences like these where it is a beautiful day, यहाँ पर आपको किसी फिजिकल एक्शन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं समझ आ रहा है, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, राइट? सो इन दैट केस यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, सो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है दैट विल एक्ट एज द मेन वर्ब and there is no helping verb in this sentence. So the more you practice, you know, आपको उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? इन रूल्स को याद रखें. इफ देयर आर सेंटेंसेस जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज राइट टू अस in the comment box and we will definitely be getting back to you. So for today we learnt about verb, the main verb and the helping verb, and how to find a helping verb in a sentence. This was for the class today. We shall take your leave. Thank you so much for watching. Please subscribe if you like our content, and thank you for being there and supporting us. Thank you so much.